हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड, इन विच आई हैव टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने देखा था कि क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स होते हैं। सो टुडे वी विल फोकस ऑन ग्रोथ ओनली। सो गाइज, व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? Growth is ongoing process in all living organisms. There are two characteristics of growth: increase in mass, increase in number. Mass like growth in mass of the body, and if mass will increase, the number of cell will increase. Now if we talk about unicellular and multicellular organisms, so both unicellular and multicellular organisms grow with the help of cell division. Cell will divide and increase in number. Listen carefully guys, कि cell is dividing, cell will enlarge, एंड जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं सेल में टिश्यू के पास, उनका सिक्रीशन हो रहा होता है। एंड ऐसे बहुत सारे फिनोमेना हैं, लाइक सेल proliferation is also a part of cell division, formation of embryo from zygote. And guys, in class 11th in chapter 15 plant growth and development, वहाँ भी ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, कि ग्रोथ इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस? Guys, growth is always irreversible process and growth is permanent. इफ़ किसी ऑर्गन, प्लांट, एनिमल का ग्रोथ हो गया होता है, उसमें इंक्रीजमेंट हो गया होता है, देन इट विल नेवर एवर डिक्रीज. ग्रोथ इज मेटाबॉलिक प्रोसेस, मीन्स बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक process happening together. Next is types of growth. The first one is indeterminate growth and the second one is determinate growth. Indeterminate growth means unlimited growth, for example plant, and the second one is determinate growth मीन्स कि लिमिटेड ग्रोथ, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल. डिटर्मिनेट ग्रोथ के केस में जो ग्रोथ होता है वो फिक्स्ड होता है, बट इन द केस ऑफ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ वहाँ पे ग्रोथ फिक्स नहीं होता है. And now there are one more types of growth on the basis of living and non-living. The first one is intrinsic growth, means living, and the extrinsic growth means non-living. The first, intrinsic growth, means it is internal. Guys, if growth is only internal, then only it can be said that growth is defining property of living organisms. In living organisms you will find intrinsic growth, तभी डिफाइनिंग फ्यूचर ग्रोथ को कहेंगे. बट लेटर हम क्या देखते हैं, वी फाइंड एक्सट्रेंसिक ग्रोथ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक माउंटेन, in which we see increasement in size. Now there is a term degrowth. Degrowth means negative growth, means कि increase in rate of catabolism and less rate of anabolism. Now what vitroculture? Vitroculture means by using microscope we can see how cell is dividing and the number of cells can be easily countable under the microscope. It can be visualized guys कि growth and reproduction process is happening, but in the case of unicellular it is impossible to find that the cell of bacteria is dividing or bacteria is growing. सो गाइज, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ इन इंक्रीज इन मास एंड नंबर, इधर इट इज़ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, or in the case of indeterminate growth, and in the case of determinate growth there is animal, intrinsic in living, extrinsic growth in non-living. So that's all about growth guys. Next वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में. सो थैंक यू सो मच for watching this video and don't forget to rate, review